Welcome to today's activity. It's Ganesh Chaturthi now, and we will start with coloring the cup to make the Ganesha. Okay, you can look over here. Yes, this is done. Right? अभी इतनी देर ये सूखेगा ना, हम नेक्स्ट इसकी कटिंग करेंगे. राइट? So we have to cut ears like this. Right? We have to cut 2 ears from red paper. Then on a golden paper I am gonna cut a crown for the god. Okay? तो मैं अभी आप लोगों को एक मुकुट बना के दिखाती हूँ. तो मुकुट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल पेपर लेंगे, उसको हाफ में फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर कोई भी डिजाइन बनाएंगे और उसको कट कर देंगे. राइट? तो देखिए यहाँ पे हमारा भगवान का मुकुट भी कट गया है. Okay, take your time. Yes, I am going to show you. Yes, मैंने मुकुट This is the crown of our god. अभी मैं इसके ऊपर भगवान के कान लगाऊंगी. यार पापा फोन कर रहे हैं. इसको ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो.
The elephant god is ready. Yes, you can have a look. मैम थोड़ा ऊपर उठा के दिखाइए। Can you show the crown once? माउस बनाएंगे जो कि भगवान को लेके घुमा के लेके आते थे, ठीक? तो ओके, तो मैं सर्कल को कट करूंगी। राइट, तो अभी एक हमने भगवान के लिए माउस बनाना है, तो माउस बनाने के लिए हमने एक सर्कल कट किया है, उसका सेंटर मिल जाए सर्कल का, ठीक है? तो ये सर्कल का सेंटर मिल गया। अब क्या करेंगे हम? उसमें एक कट लगाएंगे। राइट, मैंने एक कट लगाया सर्कल में, ठीक है? ठीक है, देखिए ऐसे मैंने एक छोटा डोम टाइप बना लिया है। ये राइट, शेप कट करके हमें इस डोम के ऊपर स्टिक करना है, वो हमारे फेस बनेगा और उसके ईयर्स बनेंगे। तो जब राइट, अब हमारा तो जिन्होंने अपने अपने बिस्किट्स उसको अलग रखेंगे और बिस्किट को मिक्सर में घुमा के उसका पाउडर बना लेंगे। यू कैन टेक 8 or 10 बिस्किट्स। उसकी क्रीम अलग निकाल लेनी है बिस्किट की, बिस्किट की क्रीम अलग लेनी है और बिस्किट को ड्राई फॉर्म में ही अलग से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, कुछ नहीं ऐड करना है। मिक्स करेंगे और मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि
हम लोग मोदक के मोल्ड में डालेंगे और उसकी साइडों में अच्छे से उसको लगाएंगे। मोदक के